Good morning, dear friends. It is such a pleasant time to come in front of you. I'm Dr. Arun Partani. I'm a joint replacement, arthroscopy, and sports injury surgeon at Rukmini Birla Hospital, Jaipur. And this this is the time when I've been told that we would be talking about the things which are involved in day-to-day work while working on computer, because there are many things which we don't take into account and we end up having some pain in the various parts of body. So just to introduce myself, I have done my MS and DNB in orthopedics, and I've been trained myself in various places like Mumbai, Pune, and outside of India like Germany and Hong Kong. And I've been the first Indian to achieve AGA German Fellowship for Sports Injuries, and have been associated with many sports league like Indian Premier League, Rajasthan Royals cricket team, and Pink Panther Pro Kabaddi team. So, in my past, I've treated patients from Rajasthan Royal like Watson, Pathan brothers, and all the players of Pink Panther Kabaddi team and various other Kabaddi team like Haryana Steelers, and have been awarded quite a good number of times for my replacement surgeries. So, all in all, I specialize myself into joints like hip, knee, and shoulder. And talking about my hospital, Rukmini Birla Hospital, it is one hospital which we know for its finest infrastructure and good healthcare, providing patients with the most compassionate way possible. So today we are going to talk about ergonomics. Now, what is ergonomics? Ergonomics is science which makes the fitting of the work according to the worker to reduce the risk of injury, discomfort, pains in body. So when we talk about ergonomics, we know when you work for a longer period of times, you might have some awkward postures, which is for a sustained period of time, or repetitive contact stresses at various parts of your body, which might lead to discomfort and disorders causing pains. And in most of us IT industries and software industries and the places where we use computer time and again, the posture, the working habits become important. Now, in the current corona crisis, when we know that many of us would be working from home, we might start using a laptop in awkward places at awkward position because we might not be having a proper desk. We would be working sometimes from our bed or someplace. But then if it goes on for a longer time without a proper way, you might end up having problems in your body, because awkward and sustained postures like if your laptop is quite far from your body, you might extend a lot. आप अपना हाथ और अपना बॉडी को आगे झुकाएंगे उस लैपटॉप को पहुंचने के लिए, उससे आपकी बैक में स्ट्रेन आएगा. या फिर अगर आप बॉडी को नहीं झुकाएंगे तो आप खुद पूरे बॉडी को झुक के और शोल्डर्स को नीचे की तरफ रखेंगे, उससे भी लॉन्ग रन में आपको पेन होने लगेगा. सो इससे लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज we can change our settings, work settings, to avoid these problems. Now, if we see about edges of your desk, if if, if your arms are rested on edges of your desk like this, the long-term pressure of your edge of desk on your arms can cause nerve pressures and injuries. Similarly, when you sit, जब आप पाँव को बहुत मोड़ के बैठते हैं तो आपकी कुर्सी का जो एज है जब आपके नी के पीछे टच होता है बहुत तेजी से और लंबे समय तक, तो फिर आपके उसमें नर्व प्रेशर से पेन हो सकते हैं. सो कॉमनली कंप्यूटर यूजेस से किस किस लेवल पे बॉडी में कंफर्ट होते हैं? अगर आपका मॉनिटर हाइट सही नहीं है तो यू माइट हैव एन हेडेक. अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर आपकी बॉडी से बहुत दूर और आप आगे झुक के काम कर रहे हैं तो यू कैन हैव अ मिड बैक टेंशन. और अगर कीपैड और माउस बहुत ऊंचे हैं तो शोल्डर अगर आपके श्रग्ड हैं इस तरह से, यू माइट हैव अ शोल्डर टेंशन. और अगर आपका माउस बराबर नहीं है तो फोरआर्म और एल्बो के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकता है. और टाइपिंग में अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा बाहर या अंदर की तरफ रहता है तो यू माइट हैव अ प्रॉब्लम इन योर रिस्ट. एंड सिमिलरली जब बैठते टाइम अगर आपके पाँव नीचे सपोर्टेड नहीं है तो आपका बैक का प्रेशर चेंज हो जाता है और आपकी बैक में पेन होता है. सो नॉर्मली जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, कोई ऐसे बैठ सकता है, कोई ऐसे बैठ सकता है, कोई ऐसे बैठ सकता है, बट ऑल दीज वेज आर नॉट आइडियल. In long run, these will cause you problems. So when you talk about how to sit in front of computer, there are four main areas of focus. This is a very important thing for I want to discuss with you. There are four important areas when you sit in front of computer. The first area to look for is your body to chair contact. Second is feet to floor. Third is hands to mouse and keyboard. And fourth is eye to monitor. So talking about them one by one, when we say body to chair, तो जब आप बैठते हैं तो आपके बैक अपराइट होने चाहिए, बैक पूरी तरह सपोर्टेड होनी चाहिए चेयर के बैक रेस्ट से,
or in a simple way we say, you don't sit on the chair, you sit in the chair. So your buttocks into the angle of chair, your back supported with the backrest of the chair, and back is upright. So that is an ideal way to support your body from chair. Second thing is your monitor height. Now your keyboard tray and your mouse should be at a similar height of your hand. So if your hand rests are lower, your forearm will be tilted and your wrists will be angulated like this. अगर आपका arm rest नीचे है और कीबोर्ड ऊपर है तो आपका फिंगर रिस्ट इस तरह से टिल्ट होगा. इस तरह से टिल्ट होने से यहाँ पे नर्व का प्रेशर आएगा और उसकी वजह से आपको नर्व प्रॉब्लम्स होंगी. और अगर बहुत ऊपर है तो आपका शोल्डर श्रग हो जाएगा. अगर आपका कीबोर्ड नीचे है, शोल्डर हाथ ऊपर है तो शोल्डर श्रग होएगा, तो उससे आपको शोल्डर पेन होगा. तो इसलिए कीबोर्ड और माउस और आपका हैंड आर्म रेस्ट एक ही लेवल पे होने चाहिए. थर्ड चीज जो हम बात करने वाले थे, दैट वाज फीट टू फ्लोर. सो नॉर्मली अगर अपन बैठ रहे हैं और अपने लेग्स अगर अनसपोर्टेड हैं, तो फिर अनसपोर्टेड लेग्स की वजह से आपकी बैक का पोस्चर चेंज हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ आ जाता है, बिकॉज यू टेंड टू कवर फॉर द अनसपोर्टेड फीट. So when you sit with your feet unsupported, that center of gravity comes in front of your body and back में आपको पेन होने लगा. इसलिए always and always your feet should be well supported, either by a bar in the lower part of the desk, or you can use a footrest. But your foot should be very well supported for the whole foot when you sit on a chair. And when you talk about wrist, so अगर आप कीबोर्ड पे काम करते हैं, तो अगर आप टाइप करते हैं, तो rather than tilting your wrist to the sides of the keyboard, shift your hands, because excessive tilting will again cause problem in your ulnar aspect of the wrist. जो बाहर का wrist का पार्ट है, अगर आपको बहुत टिल्ट करके काम करते हैं तो उसके अंदर पेन होने लगता है. तो कई बार इसकी जगह अर्गोनॉमिक कीबोर्ड भी आते हैं जिसमें कीबोर्ड दो में स्प्लिट हो जाता है ताकि आपका हाथ टिल्ट नहीं करना पड़े, बट अदरवाइज वो उतना कॉमन नहीं है. तो हम अपने हाथ को पूरा शिफ्ट करें रादर देन एंगुलेटिंग आवर हैंड्स. और माउस के अंदर भी माउस को फर्म ग्रिप करें विद द होल हैंड रादर देन द टिप ऑफ योर हैंड्स, टिप ऑफ योर फिंगर्स. तो उससे आपका पूरा हाथ सपोर्टेड रहेगा, तो नर्व कंप्रेशंस के और पेन्स के चांसेस कम है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्यूटर वर्किंग में जो हम देखते हैं, दैट इज आईज टू स्क्रीन. आइडियल मॉनिटर हाइट. दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली आस्क्ड कि मॉनिटर का हाइट आपकी आई लेवल से कितना ऊपर या कितना नीचे होना चाहिए. तो अगर अपन सिंगल मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो इट शुड सेट इट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू एंड द सेंटर ऑफ मॉनिटर शुड बी इन लाइन विद योर बॉडी. इफ यू आर यूजिंग ड्यूअल मॉनिटर्स, कोई आदमी अगर दो मॉनिटर पे काम करता है, सो दोनों एक एंगल पे होने चाहिए, करीब 50-50 या 60-40 के एंगल पे. ऐसा नहीं कि एक बहुत ज्यादा टिल्टेड हो और एक कम टिल्टेड हो. तो ड्यूअल मॉनिटर्स में ध्यान रखें. और लैपटॉप के अंदर आपको कभी भी जो है लैपटॉप को गोदी में रख के काम नहीं करना है. तो द नेम इज लैपटॉप. लैप मतलब गोदी, तो गोदी पे रख के काम करें, बट दैट इज द रॉन्ग वे. लैपटॉप कभी भी गोदी में रख के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस केस में आपकी गर्दन झुक जाती है. आपका हेड इज अराउंड 8 kg इन वेट. तो अगर आप बहुत लंबे समय तक गर्दन झुका के रखेंगे, योर नेक मसल विल हैव टू होल्ड 8 kg ऑफ वेट continuously, which will cause pain and strain in your neck muscles. So laptop should be lifted well above your table so that the monitor height should be at the level of the half of the middle of the monitor should be at the level of your eye. So इसमें भी अगर आप चश्मा नहीं यूज करते हैं, that the ideal method is the center of the monitor should be at the level of your eye. अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं और बाईफोकल यूज करते हैं, तो बाईफोकल में आपका नियर विजन और फार विजन का ग्लासेस अलग होता है. तो नियर विजन का ग्लास से देखने के लिए आपको यूं करके देखना पड़ता है. तो उस केस में आपका मॉनिटर का हाइट आपके आई लेवल से नीचे रहेगा. बट अगर आप मोनोफोकल यूजर हैं या स्टैंडर्ड नॉर्मल स्पेक्स यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में आपका लैपटॉप का सेंटर आपकी आई लेवल पे रहेगा, सो दैट योर नेक इज नॉट स्ट्रेन्ड एंड नेक इज सपोर्टेड. तो आपको नेक पेन नहीं होगा. पर इस कोरोना के टाइम में जब भी वर्क फ्रॉम होम में अपन जरूर इन चीजों का ध्यान रखेंगे. कभी भी पलंग पे टेढ़े मेढ़े पोस्चर्स में बैठ के लिखना या अपने काउच पे, अपने सोफे पे स्लाउच करना. कई लोग सोफे पे ऐसा स्लाउच करके फिर टाइप करके काम करने लगते हैं. ऑल दीज थिंग्स might look good to you, but with some point of time they will cause pain
discomfort, and problem in your back, neck और hands and legs. आईज के लिए ध्यान रखें कि मॉनिटर को अपना एक डिस्टेंस पे रखें, मॉनिटर स्क्रीन यूज करें, वरना एक कंटिन्यूस जो ब्राइटनेस आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर से आई आती है, इट causes fatigue in your eye and muscles of your eye, and which in turn in long run can causes problems related to eye. So all in all अगर अपन बात करें, so सबसे इंपॉर्टेंट है एडजस्ट द चेयर टू फिट यू. बहुत ज्यादा जो आजकल फैशन में है कि कर्व्स आते हैं चेयर के बैक में, दैट इज नॉट द राइट थिंग. योर चेयर शुड बी हैव अ flat back so that your back can be well supported. Sit in the chair, buttocks in the angle of chair. So if this is your chair, your buttocks go in the angle of chair, back supported with the back of the chair, and feet well supported to the ground. Adequate foot support is must. And keyboard and mouse should be at the same level of your hands. Your armrest should be lifted till the time your hands come to the same level of keyboard and mouse. And position of your monitors is very critical. Just the half middle of the monitor at the level of your eye. At the same time, we should also take care of some nutrition part of your body. So you should eat a lot of green vegetables like spinach, palak, methi, broccoli, cauliflower, cabbage. All these vegetables are rich in calcium because lots of indoor stay during this corona time will cause vitamin D deficiency, calcium deficiency. So in that, to avoid that, we should have ample amount of green in our food, ample amount of white in our food like milk, curd, buttermilk, छाछ जिसे अपन बोलते हैं, चीज, दूध, दही, छाछ, चीज, ये अपने खाने में अच्छे से होना चाहिए. ड्राई फ्रूट्स में अगर अपन बात करें, आलमंड्स, बादाम, तिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम सोर्सेज में. और सप्लीमेंट्स में वी शुड टेक कैल्शियम, विटामिन डी, कॉड फिश ऑयल. विटामिन डी स्पेशली एम्फेसाइज अपन करेंगे बिकॉज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मसल फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन. तो विटामिन डी और सन एक्सपोजर आपको मिलता नहीं इस टाइम पे जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बाहर जाना आना बंद है. तो विटामिन डी या तो आप सप्लीमेंट्स लें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, या खाने में ऐसी चीजें लें जिनमें विटामिन डी और कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट में हो. और इसके अलावा घर पे रह के एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करें बिकॉज घर पे रहने से इस टाइम बहुत लोगों की लाइफ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हो चुकी है. जो बाहर घूमने जाते थे, जो एक्सरसाइज करते थे, वो सब चीज धीरे धीरे कम होती जा रही है, बंद होती जा रही है. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेचिंग, सो डिवाइड योर वर्कआउट इनटू कार्डियो ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, and of course your strengthening. So as we grow old, our joints start become stiff. So अगर अपन स्पाइन की बात करें, स्पाइन में कई सारे फैसेट जॉइंट्स होते हैं, वो स्टिफ होने लगते हैं. और जब लॉन्ग सिटिंग आवर्स अपन करते हैं कंप्यूटर के सामने, तो स्पाइन आपकी या बैक आपकी कंटिन्यूस पेन करने लगती है. सो बेस्ट ट्रीटमेंट इज अ गुड स्ट्रेचिंग रेजिम, जिसमें कि अपन नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं, ट्विस्टिंग कर सकते हैं. तो गुड स्ट्रेचिंग ऑफ स्पाइन अलॉन्ग विद कोर स्ट्रेंथनिंग. जैसे अपन घर पे अगर हैं तो एब क्रंचेस, ये सारी एक्सरसाइज वो हैं जो अपन घर पे विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट जिम, घर पे अपन आराम से कर सकते हैं. नी टू चेस्ट, रोलिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, एंड ऑफ कोर्स एब स्ट्रेंथनिंग, एब क्रंचेस, सूर्य नमस्कार जिसको हम एक्सटेंसिव स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं. सारे तरह के योग, प्राणायाम्स, ये सब आपके जॉइंट को सॉफ्ट रखेंगे. तो जब आप लॉन्ग सिटिंग भी करेंगे तो आपको जॉइंट्स और स्पाइन आपको उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा. I think ergonomics is more or less being covered. Abhi, if we have any other question, any other query regarding the same, we can take the queries from the audience for the same. So Amber has a question. Rib pain due to posture. So rib pain commonly vitamin D deficiency से होते हैं. तो विटामिन डी रिब पेन अगर है तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए. और कैल्शियम के साथ में और विटामिन डी के साथ में
जब आप वर्क करते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की आदत तो आगे टिल्ट करके काम करते हैं, रिब्स आपके एज ऑफ टेबल को टच हो रही हैं, या फिर जब आप लेट के काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पोस्चर में रिब कंटिन्यूस अगर प्रेशर में आ रही है तो वो भी पेन कर सकता है। सो ट्राई चेंजिंग योर पोस्चर सो दैट रिब्स आर नॉट बीइंग स्ट्रेन्ड। डू गुड इंस्पिरेशन एक्सरसाइजेज, गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना। टेक विटामिन डी सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट, so that these things, the rib pain will 99% will go away with these things. खाने में जैसे मैंने बताया, टेक गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड दूध, दही, छाछ, ये सब आप लें। और बैठते टाइम अवॉइड करें, आप कई बार अननोइंगली अपनी रिब्स जो हैं वो टेबल के कांटेक्ट में होती है, जब अपन आगे झुक के कई बार लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, तो रिब्स कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए, और विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंट अच्छे से होना चाहिए। जो कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं, सर्वाइकल पेन बहुत कॉमन रहता है इसके अंदर। सर्वाइकल पेन वो लोग बोल के आते हैं, आधे से ज्यादा हमारे कंप्यूटर वर्कर्स जो हमारे पास आते हैं, सर्वाइकल पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, ये सब फटीग की वजह से इनमें पेन होता है। तो इसके लिए कुछ कॉमन एक्सरसाइज होती है सर्वाइकल स्ट्रेंथनिंग। तो हाथ को आगे रोक के नेक को पुश करें, साइड में रख के नेक को पुश करें, तो नेक को चारों डायरेक्शन में पुश करें और हाथ से रोके, तो नेक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, और एट द टाइम अपने सारी इन मसल्स को स्ट्रेच आउट करें, नेक को झुका के दोनों साइड में। तो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग से आपका नेक पेन या सर्वाइकल पेन काफी हद तक कम हो जाता है। या विशाल, सो नेक पेन ही की मैं यही बात कर रहा था, बिकॉज इट इज द कॉमनेस्ट कंप्लेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वर्कर्स। वर्क फ्रॉम होम में स्पेशली प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार हम लेट के जब काम करते हैं तो हमारी गर्दन को हम यूं उठा के काम करते हैं, लेटे हुए होते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। सो आप मान के चलिए योर हेड इज अराउंड 8 केजीज इन वेट, 7 to 8 केजीज इन वेट। तो अगर आप आगे झुक के ऐसे काम कर रहे हैं तो आपको 8 किलो का वेट आपकी नेक की मसल्स को कंटिन्यूस होल्ड करना पड़ रहा है। या फिर आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंड, बहुत ऊंचा करके लेट के काम कर रहे हैं तो भी नेक को 8 केजी मसल, 8 केजी वेट को होल्ड करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले नेक, अगर आपके हाथ पे भी मैं 8 किलो वजन पकड़ा के ऐसे खड़ा कर दूं साइड में, थोड़ी देर में आपको शोल्डर पेन करने लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले नेक को डी स्ट्रेस करें, जब भी वर्क करें अपराइट पोस्चर में करें ताकि नेक की मसल्स रिलैक्स रहें। और उसके अलावा नेक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक्स कहते हैं, सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स। हाथ से गर्दन को रोके नेक को आगे पुश करने की कोशिश करें, मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ प्रेशर लगाएंगे, आगे भी, पीछे भी, राइट भी, लेफ्ट भी, चारों डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे और रोकेंगे, 10 तक काउंट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज से नेक की मसल स्ट्रांग होंगी और धीरे धीरे पेन कम हो जाएगा। उसके अलावा स्ट्रेचिंग करेंगे, नेक की आगे की तरफ पूरा झुकाएंगे, साइडवेज झुकाएंगे, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। तो स्ट्रेचिंग विद स्ट्रेंथनिंग एंड अपराइट पोस्चर विल सॉल्व योर नेक प्रॉब्लम्स 9 out of 10 times. और सेकंड चीज जो विशाल, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा हमेशा, जो मैंने एक चीज अभी अपनी डिस्कशन में बोला था, नेक पेन के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर का जो सेंटर है वो आपकी आई लेवल पे होना चाहिए। आमिर सबील अख्तर, you feel numbness in your fingers while after working for long on my laptop. One more thing is my laptop is old and emits heat. So old laptop, you change it. Matlab it is the old laptop or heat, it will not cause any problem. Uh, I'll come back to you, Vishal. Amir, numbness in finger is a very important thing. जो हम so called cervical pain बोल के आते हैं, 9 out of 10 times it is just muscular pain, but if you have numbness in your finger, it could be an actual cervical. So look for your vitamin B12 levels, look for your neck spine. So consult a doctor, get your vitamin B12 level checked, और अपना cervical spine का MRI कराइए। दोनों में से एक ना एक चीज इम्प्लीकेट होगा आपकी नमनेस के लिए। तो अगर B12 कम है तो B12 सप्लीमेंट लीजिए, और कल में MRI में डिस्क आती है तो फिर उसका जो एक्सरसाइजेस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन वगैरह आप लीजिए। बट आमिर, मीट अ डॉक्टर इफ यू हैव नमनेस इन योर फिंगर्स, इट इज नॉट राइट। विशाल, यस, 4 से 5 घंटे के वर्क के बाद नेक पेन हो सकता है। अगेन इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई, हाथ से गर्दन को रोके आगे पुश करें, साइड में रोके नेक से पुश करें,
लेफ्ट में रोके नेक से पुश करें, पीछे रोके नेक से पुश करें, चारों डायरेक्शन में नेक से फोर्स लगाएं और हाथ से रोकें। ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। जिस तरह से आपको अगर दौड़ना है, बहुत ताकत चाहिए और थक जाते हैं, तो उसको बेस्ट तरीका है टू बिल्ड द स्टेमिना इज यू हैव टू increase your exercise, तो stamina will build up and gradually you will not fatigue. Similarly for neck, अगर आप exercise करते हैं, neck की muscle की strength आती है, so you will, oh good, great, I will try to speak in English. I was told that I should talk in mixed language, so talk in English. Your neck muscles should not be weak because a weak neck muscles will cause pain, so strengthen your muscles. Chavi, continuous strain near neck and back. So what you say neck and back is basically cervicobrachial. Chavi, it is cervicobrachial region. This cervicobrachial region, this part is the commonest part involved in pain in computer users. So strengthen your muscles in form of cervical isometrics. You can Google it, cervical isometric exercises, and also stretching of your interscapular muscles like this on both sides, and neck stretching like this, Chavi. And of course, strengthening of your shoulder is something called a scapular sitting. You lift your hand and retract your scapula behind, retract your shoulder blade behind. So strengthen your muscle and stretch them, Chavi. That will solve your problem. Hariram Sharma ji, back pain when long time sitting on the chair. Yes. So as I told you, might have joined late. So back pain will be gone if you take care of four things: body to chair contact, back to chair, back supported by chair, foot to floor, foot well kept on your floor, well supported, not hanging, hands to the level of mouse and keyboard, and eyes at the level of monitor. These four things will clear 8 out of 10 times your back pain, along with some good exercises called as flexion regime exercises. You can Google them, flexion regime exercises for back pain. So exercise and sit properly will help you, Hari Ramji. AGKR 132 is now, as I'm speaking in English, I think that should not be a problem with you. Mukesh Kumar ji, work only 30 minutes, walk 2 minutes. Yes, that is a good idea. Rather than continuous sitting for a really long time, you can split your sitting. After 20 to 30 minutes, you can take a break for 2 minutes, stretch your body, and get back to work. So that will increase your efficiency, decrease your pain. Should be good. But if we again go through, neck pain and back pain is the commonest thing when we talk about computer workers. So take good diet also. Take, because in work from home you would be devoid of sunlight, you would not be having exposure to sunlight, you would not be going out, you would not be exercising. So take good healthy food, healthy diet in forms of green and white. So how often, again I say, it is not how often, it is after 30 minutes of work, 30 to 40 minutes of work, you take a 5 minute break, you stretch your body, AGKR 132. So you stretch your body, you twist on the both sides, you tilt on the both sides, and you stretch your shoulder, and then after 5 minutes you can get back to work, AGKR 132. Madhulika Bandyopadhyay, hi. I have a pain in my left wrist. Now, pain in left wrist since 2 days. You'll have to rule out a lot many causes, because it is just a brief description. So, where exactly in the wrist, what kind of pain, how severe the pain is, that will determine what needs to be done. Just pain in left wrist is slightly less information to help you.
Okay, I think I have new viewers. So we start again. We start again. We start the talk again. And then for the people who have joined late, I'm Dr. Arun Partani. I'm a joint replacement arthroscopy sports injury surgeon at Rukmini Birla Hospital, and I've been associated with many sports league like uh, Pink. Amber, I'll come back to you slightly later. Um, so I've done my MSN in orthopedics, and I've been associated with sports injury sports teams like Pink Panther, Pro Kabaddi team, IPL Indian Premier League, Rajasthan Royals team as a sports injury surgeon. And also I've been awarded quite a good number of times for my joint replacement surgeries. And along with that, we have been associated professionally with other teams like Haryana Steelers and other kabaddi teams, other sports people as well. My basic specialty is knee, hip, and shoulder surgeries, be it sports injury, ligament injuries, or replacements. So you were talking about ergonomics. Ergonomics is basically it is science of fitting your workplace according to your work. So if we talk about ergonomics, we know that long-term awkward sustained postures with repetitive contact stress will cause discomfort, pain, and problems in your parts of your body like headache, mid-back tension, shoulder tension, forearm elbow pain, wrist pain, and low back pain. So when we sit on a chair, the important points to take care, we should not slouch. Work from home doesn't mean that you start working lying on a couch or a bed. You should try to have a proper desk and a chair setup. The chair should not have curves in the back. It should be a straight back chair. You should sit in the chair, not on the chair. Your buttock should be well into the angle of chair, back supported for your back supported with the backrest of the chair, and foot should be well grounded, well supported either at the floor or a footrest. And your mouse and keyboard should be at the hand level, because if your mouse and keyboard are not at the hand level, your hands would be angulated and in the long run will cause you wrist pain. So your keyboard and mouse should be at the same level. Your armrest should be lifted till the time your hand, forearm, and hands are at the same level. If your forearm and hands are at the higher level, your shoulder would be shrugged. Shoulder will cause pain. If it is at lower level, your wrist would be angulated and wrist would cause pain. If your feet are not well supported, your back would tilt and your center of gravity comes in forward and it will cause back pain. And the important thing is your monitor, the center of your monitor should be at the level of your eye so that your neck is not strained. And if we talk about a bifocal user, the center of monitor should be, the top of the monitor should be below the level of your eye level. Uh, Talking about a hospital, Rukmini Birla Hospital is a prime hospital, prime medical facility in Rajasthan with the topmost infrastructure and the best healthcare in Rajasthan. So coming back to question number, Kashyap, rib pain I talked about something liberalism. So again, number I said that rib pains are mostly caused by vitamin D deficiency. So look for your vitamin D levels, look for your calcium levels, and mostly these have underlying vitamin D deficiencies which cause your rib pains. So look for your vitamin D levels and get a supplement under guidance of a doctor. Madhulika Bandyopadhyay, yeah. So again, if there is a wrist pain, if you look for Madhulika, look for your keyboard and mouse levels. As I told you, it should be ideally your armrest should be lifted till your forearms are straight, and the keyboard and mouse at the same level as of your forearms. AGKR 132, sleeping toilet headaches after continuous looking system. Yes, that is a very good thing. So don't keep your monitor very bright. Keep your surroundings bright so that the maximum, the eyes are more fatigued when the background is dark and the laptop is at a high brightness level, because the high, when you continuously focus on a high brightness in the backdrop of a dark thing, your eyes will start having fatigue, and you might have migraine. You already have a migraine. So you should try to keep your surroundings lit, well lit, and
your monitor brightness should become, or you can use a screen. You have monitor screens available, which will decrease the light emitted by the monitor and decrease the fatigue of your eyes. Headaches, again, I'm an orthopedic surgeon, so not the right guy to advise on headaches. A neurologist would be better guy to talk to you about your headaches and migraine. But yes, again, an evenly spaced, well lit background would have a better effect. Sagar Nayak. So you have severe pain near to the spine, joined to my back head since 5 years ago. MRI medicine. Sagar, in my talk, I have emphasized on this thing. This is called as cervicobrachial pain. So mostly the MRIs are normal. MRIs don't show you. Yeah, that's what I'm saying. As per MRI, there is no issue because in such cases, MRIs are nearly normal always. Because the problem is not with your spine, the problem is with your muscles and posture. So the pain you are talking about is somewhere over here, below the neck, between the shoulder blades. So it is called a cervicobrachial pain. So it is very important. Again, I will repeat: strengthen your muscle, stretch your muscle. 80% of your treatment is strengthening your muscle as per your load required. Now, if you're a computer guy, you require long sitting. I am not habitual to sitting in front of a computer. Within this last 30 minutes, I myself started having some pain here. So definitely, if you work for 6 7 hours, it is definitely going to cause you pain over here because again, your head is 8 kgs. 8 kgs going like this. Your neck would be stressed out. Your muscles would be fatigued, and you will start having pain. So sit straight, Sagar. Sit upright. Strengthen your muscle. Do cervical isometrics exercises. It's called as cervical isometrics. Cervical isometrics exercises. You can Google it out. So strengthen your muscle at the same time, stretch your cervicobrachial area. So neck in front, neck in sides, both the sides, and very important, your elbow to the other shoulder, elbow going to other shoulder. So stretch your back like this, elbow going to the other shoulder, elbow going to the other shoulder, neck in front, neck in sides. So that is the stretching, and the exercise would be cervical isometric saga. In cervical isometrics, you give force by your neck, you push your head in front, stop by your hands, push your head inside, again stopping by your hand, push your head in the other side, count till 10, push your head in the back, count till 10. So that is called a cervical isometric saga. You don't need a lot of investigation. Just get your vitamin D level, Sagar, and if vitamin D is low, get a supplementation. AGKR, so the cervical isometrics are meant for the people who have neck pain, but I think your problem was back pain. So for that, you just rotation of your spine. You can do that even sitting on the chair, or you get up from your chair, rotate your spine, tilt your spine, and then stretch your shoulders and get back to work. I think just 2 to 3 minutes of stretching will be good for you. But back exercises, strengthening exercises, at least 3 times a day, morning, just after getting up, before leaving for office, coming back from office, and before sleeping. So 3 to 4 times a day you can do the back strengthening exercises. It is called as flexion regime exercises. You can Google it out. It's called as flexion regime exercises for back.
Oh, headaches. I'm sorry. Headaches. Headaches के लिए, I think for headaches you have you to meet a neurologist, because if you have a migraine, a neurologist would be a better guy to guide you through. So Rishabh, there are four four basic tips, the four important points when you work on a laptop or a computer. There are four important points, Rishabh, which should be taken care of. If you look for those 4 points always, your postures would be fine and your neck should be fine. And those 4 points are body to chair. Body to chair means you should sit in the chair, not on the chair. Always your buttocks in the angle of chair and back supported well by an upright back of chair. Second is foot to floor. Your foot should be well supported by the bar on the table or a footrest. So foot supported, back supported, and your hands at the level of mouse and keyboard, and monitor center at your eye level. So these four things are very important, Rishabh. Otherwise, you will end up having a very bad neck pain when you have some 8 to 10 years of work behind you. So you should not use your laptop in your bed. So laptop doesn't mean using in lab. You use it on a table if you have to work for a longer period of hours. Also, do neck extension like this, and neck flexion like this to stretch out your muscles. I think it has been a fantastic session with very good involvement by the audience and good questions by everybody. Sagar, AJKR 132, Madhulika, Rishabh, Amber, Chavi, of course, with the neck pain, Mukesh, Hariramji, Vishal Agrawal. So good interactive sessions, I think. And thank you, Vikas, for such a good platform. And for any further queries, you can visit our hospital website, ckbirlahospitals.com. Or we are Rukmini Birla Hospital, Jaipur, a subsidiary of CK Birla Group, and one of the finest healthcare facility in Rajasthan with the best possible infrastructure. Thank you, Parth. I think we should wrap it off here. Good talking to everybody.